Good morning and Jain students. Welcome students. Myself Ritu Pandey and I am your computer teacher. So, how are you all and must have enjoyed your holidays? I hope you all are safe and healthy. So, firstly, tell me this how many of you knows about the SMS? Okay, so SMS stands for soap, mask, and social distancing. So S for soap and M for mask, S for social distancing. Okay, students. So, I know you all are followed the rules and regulations regarding COVID-19, and you are followed the SMS rule of SMS. Okay, so let's start the chapter. Chapter 2, Uses of a computer. Computers are very important for us, and you have to learn about the previous chapter that computers are used for many things. We can do many things on a computer like typing, playing games, and watch cartoon movies, listening songs, etc. So nowadays we are using a computer in different ways and different places. Okay, students? Firstly, first of all, before starting the chapter, I want to ask a question. Okay? Why should we use a computer? Anybody knows that? Why should we use a computer? Okay, I give you 4 options. Choose the correct option. Okay? So first option is to save time, to only watch movies, to make our work easier, to play games all a day. Yes, students, to save our time. Computers save our time and make our work easier. Yes, I know. Computer also we watch our movies in computer, and we all played our games in a computer, but not only watch movies. हम हमेशा कंप्यूटर्स पे मूवी हमेशा तो नहीं देखते हैं, हम टाइपिंग भी करते हैं, देन हम होमवर्क्स भी करते हैं, और नाउ डेज वी आर यूजिंग कंप्यूटर मैनी मोर वर्क्स. ओके, देन प्ले गेम्स करते हैं, बट नॉट अ ऑल डे. पूरे टाइम आप तो प्ले गेम्स नहीं करते हैं. सो कंप्यूटर का यूज़ हम अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए एंड अपने समय को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी वेज एंड मैनी प्लेसेस. कंप्यूटर हमारा हेल्प करता है कई तरीक़ों से, कई जगहों पे, जैसे स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेस, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, airport, and the railway station. So in this chapter we are going to see how the computer help us in many ways and many places. So there are the list given on the screen. These are only few points, students. These are only few points, okay, which I will explaining. But otherwise many things computer can be done, and there are many more places in which computer are used. We start with the school. In the school, computer are used explaining a topics. You all are know smart classes. Yes, teacher shows pictures and videos, teach lessons to student with the हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. हम स्मार्ट क्लास में जाते हैं, वहाँ पे हमें टीचर स्मार्ट क्लास के थ्रू, वीडियोस के थ्रू एंड पिक्चर्स के थ्रू लेसन एक्सप्लेन करती हैं. यस, तो ये वर्क हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं.
And computer also help us to solve your maths problems, keep records of books in library. आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में आपने देखा कि बुक्स के रिकॉर्ड्स को सर या मैम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं with the use of computer. And in the library and office maintain records and prepare text paper and result sheets, prepare timetable and store information about the students, search different topics and information with the use of computer. So in school हम कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करते हैं? हम स्मार्ट क्लास में हमारी पढ़ाई होती है, हम टीच करते हैं, टीचर्स हमें स्मार्ट क्लास के थ्रू हमें चैप्टर एक्सप्लेन कराती हैं. देन लाइब्रेरी में बुक्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, देन टेक्स्ट पेपर्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, रिजल्ट शीट एंड टाइम टेबल मेक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. देन इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इन स्कूल्स. ओके, सो कंप्यूटर very useful for the school in the school. So next we can talk about the home. At home computer are used to type documents, letter to do, list and shopping online, etc. We can do these things with the use of computer. You can see your father, your mother type a documents and type a letters with the use of computer. And yes, you watch a movies and listen songs with the use of a computer. Students play games, we can play games, and students play games with the use of computer and prepare school projects, chat with your friends. These works are we can do with the use of a computer. So many more uses of a computer at home. हम कंप्यूटर के थ्रू और भी सारे वर्क्स कर सकते हैं. Your mother will be maintain the records of household items and many more things. We can use a computer at home. कंप्यूटर के थ्रू हम अपने घर में बहुत सारे वर्क्स कर सकते हैं एंड इट कैन बी आवर वर्क ईजियर एंड ये हमारा टाइम भी बहुत सेव करता है. सो कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफिस. सो एट ऑफिस computers are very useful. As you see, computer do a lots of work in offices. In office, computer are used to type documents and send emails, print documents, maintain a records of office staff, and store large amount of information and large amount of data in the computer. So in office, a computer is very useful, and in offices, computer done the many types of work, various types of work. ऑफिस में हम सब देखते हैं कि बहुत सारे वर्क्स होते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, फाइल मेंटेन होती हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप होते हैं, देन ईमेल सेंड्स होते हैं, देन रिसीविंग होते हैं. तो ये सारे वर्क्स हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू सी अ कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल and they are used in different places and perform different tasks. So in this class we have to learn about the uses of a computer in school, home and offices, and then next class we have to learn about the some other uses of a computer. Lastly, we have to give you a assignment. I am providing an assignment to you. Do copy the question and answer neatly in your copy and complete your work. I will provide you answer in tomorrow. So students, you can do your work properly and neatly. Thank you and have a nice day, students. Stay home, stay healthy.